Our today's class is for 12th class and our subject is geology. We have discussed in the previous class types of folds. What are folds and what are steps? There we have discussed two types of folds, anticlinorium type of fold and synclinorium type of fold. In this class, we will try to understand symmetrical and asymmetrical type of folds. These symmetrical and asymmetrical type of folds are based on the position of axial plane. So these two types wholly depend upon the axial plane's position or position of axial plane. Symmetrical type of folds are those folds, they are also known as normal folds, or we can say them these are the upright folds. They are always in a in a vertical position, or we can say these are in such type of a fold the axial plane is essentially in a vertical position. This is an axial plane which is always in a vertical position, either in the type of anticlinal fold or in a type of synclinal fold. The axial plane is always in a vertical position. So, no doubt these axial planes either passes through the crust. This is the crust. If they pass through the crust, they are in vertical position, or they pass through this trough, still they are in vertical position. So this is the case of symmetrical type of folds where the limbs are of equal length. These are the limbs and they are of equal length. So if from this a position of this axial plane, point of this axial plane to this bottom side, and from this side to this, they are of equal length. So the length of limbs are equal and they always dip in opposite direction. So these are the limbs, this is the direction of limbs. So these always in upward, they goes to this side, limbs direction is this and this is the on this side the limb direction. Here also the limb direction is on dip towards the center and also this center. So same position. So in the type of asymmetrical type of folds, when we see all those folds, so all those folds which are anticlinal fold or synclinal fold. Either they are anticlinal where the axial plane passes the crust, or axial plane passes through trough. Whether they are anticlinal fold, anticlinal, or they are synclinal. What happens in these types of folds? The limbs are unequal in length. So here the length of limbs length is larger as compared to the this side limbs. These are also limbs. Here the length of limbs is larger as compared to the length here on the right side. Left side limbs are larger size, whereas the right side limbs are smaller size. So these the limbs in these types of asymmetrical type of folds, the length of limbs are not equal. But in case of symmetrical type of folds, the length of limbs are always equal. So this is the difference. And the dip, these in case of symmetrical types of folds, the limbs dip into opposite directions. These limbs dip into opposite directions, while in case of asymmetrical type of folds, the limbs dip towards each other, or in other words we can say they dip towards the same direction. So they can dip unequally on either side. They cannot dip in equal or in opposite directions. They dip on either side unequally.
from the hinge. As you know, in the folds, when we see the fold, this line is the hinge, and from the hinge the limbs here dip unequal. But in case of asymmetrical folds, they dip direct the dip unequally. The limbs direct from the hinge in unequal manner, or on unequally on either side from the hinge. So if we try to understand in a simple way, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल फोल्ड जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक्शियल प्लेन की बुनियाद पे ही, इसके पोजीशन के बुनियाद पे ही डिफरेंशिएट किए जाते हैं। नंबर एक बात, सिमेट्रिकल फोल्ड जो होते हैं, सिमेट्रिकल फोल्ड्स को नॉर्मल फोल्ड्स या अपराइट फोल्ड्स भी कहते हैं। जिस तरह सिमेट्रिकल फोल्ड्स में, चाहे अगर हम बात करेंगे क्रस्ट की, जो एक्शियल प्लेन होता है जो क्रस्ट से गुजर जाता है, ये इस फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। नंबर एक बात एक्शियल, दूसरा कि एक्शियल प्लेन हमेशा यहाँ पे वर्टिकल होता है और ये जब क्रस्ट के पास से गुजरता है दो बराबर हिस्सों में। इसी तरह से यही एक्शियल प्लेन फोल्ड का हमेशा फिर वर्टिकल, चाहे सिंक लाइन की शक्ल में हो और ट्रफ के ओर गुजरता हो, तो तब भी ये एक्शियल प्लेन इस सिंक लाइनल फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, क्योंकि ये ट्रफ के मतलब से गुजरता है। ट्रफ के पॉइंट से जो गुजरने वाला एक्शियल प्लेन सिंक लाइनल फोल्ड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। या फिर से हम रिपीट करेंगे, एक्शियल प्लेन जो एंटीक्लाइनल फोल्ड यानी क्रस्ट के पॉइंट से जब गुजरता है वर्टिकल शक्ल में, तो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। इसको हम सिंपली सिमेट्रिकल फोल्ड। एसिमेट्रिकल जब हम शक्ल से ही इसको डिफाइन करेंगे, एसिमेट्रिकल फोल्ड में इतना ही फर्क है, पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सिमेट्रिकल फोल्ड्स में जब हम लिम्ब्स की बात करेंगे, लिम्ब्स जो है वो इक्वल साइज के होते हैं और इस अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। while as in case of asymmetrical folds ऐसे तमाम जो भी फोल्ड्स है, चाहे एंटीक्लाइनल हो या सिंक्लाइनल हो, इन दो तरह के फोल्ड्स जिनमें लिम्ब्स अनइक्वली, यानी लिम्ब्स कहीं सेम डायरेक्शन में नहीं जाते हैं या अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी बात करेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाते हैं बल्कि अनइक्वली। नंबर एक, इनकी लेंथ जो होती है वो बराबर नहीं होती है। नंबर दो, लिम्ब्स में क्या हो जाता है, जो डिप होता है, डायरेक्शन ऑफ डिप, वो कहीं और एक लिम्ब की एक साइड में जाती है, दूसरे लिम्ब की डिप दूसरे। यहाँ पे जो डिप होता है वो सेम होता है, यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लिम्ब्स होती है सेम होती है इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फोल्ड्स, while as in case of asymmetrical folds the length of limbs are not equal. The limbs does not match, the length of limbs does not match. Here the length of limbs are always equal, but in case of asymmetrical folds, whether they are anticlinal type of asymmetrical folds or in case of synclinal, the asymmetrical folds limbs never matches, or they did not have the same length. Their limbs did not have the same length. They always dip unequally. In other words, dip unequally का माने है कि उनके जो डिप का एंगल जो होता है वो बराबर नहीं होता है। एसिमेट्रिकल फोल्ड्स के जो हिंज लाइन होती है वहां से जो साइड्स की और डायरेक्शन जो लिम्ब्स की होती है वो डिफरेंट होती है, सेम नहीं होती है, ऑलवेज डिफरेंट, जैसे हम बात करेंगे। और इसमें एक खास चीज याद रखना है, सिमेट्रिकल फोल्ड्स में एक्शियल प्लेन हमेशा वर्टिकल होता है फोल्ड पे, व्हाइल एज इन केस ऑफ एसिमेट्रिकल फोल्ड्स ये जो एक्शियल प्लेन ये हमेशा इंक्लाइनड पोजीशन में आता है। फोल्ड के टर्न होने की वजह से, फोल्ड के अनइक्वल लेंथ, लिम्ब्स की अनइक्वल लेंथ की वजह से
एक्शियल प्लेन जो है हमारे फोल्ड का होता है वो एसिमेट्रिकल फोल्ड में, चाहे एंटीक्लाइनल एसिमेट्रिकल हो या सिंक्लाइनल एसिमेट्रिकल हो, हमेशा जो एक्शियल प्लेन है वो इंक्लाइनड पोजीशन में आता है। इसकी लिम्ब्स कभी भी बराबर नहीं होती है। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल फोल्ड्स, चाहे एंटीक्लाइनल सिमेट्रिकल हो या सिंक्लाइनल सिमेट्रिकल हो, एक्शियल प्लेन हमेशा वर्टिकल होता है, लिम्ब्स हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं, लिम्ब्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट regarding the symmetrical as well as asymmetrical. This is a simple topic and to be discussed in a simple way. आसानी से इसको याद करना है, ज्यादा लंबा चौड़ा है। नॉर्मल यहाँ पे सिमेट्रिकल में हमेशा एक्शियल प्लेन की पोजीशन की वजह से हम इनपुट में, यहाँ पे एक्शियल प्लेन जो हमेशा वर्टिकल रहता है और यहाँ पे हमेशा इंक्लाइंड। यहाँ लिम्ब्स बराबर होते हैं, यहाँ लिम्ब्स बराबर नहीं होते। यहाँ लिम्ब्स अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ लिम्ब्स अपोजिशन कहीं भी जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट regarding the symmetrical as well as asymmetrical folds.